Good evening, all. Respected dignitaries, we are conducting International Adolescents Health Week. Myself, Dr. Chitra Kulkarni, welcome you all. आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे, कुमार वय 9 ते 19, 9 to 19 years roughly is a treasure house of energy, new ideas, new concepts, and a daredevil attitude. हा अश्वजीवनाचा वाहे विराट वेगे, रिकबीत पाय नाही, नाही लगाम हाती. या स्थितीला आपल्या सर्वांच्या अनुभवातून, मोठ्यांच्या शिकवणीतून एक चांगला नागरिक आपल्याला बनवायचा आहे. With our unconditional love and support to this young India, we have to choose a certain topic which is near to their heart. And so the today's title is No Permanent Loss is Worth of a Temporary Pleasure. And these pleasures are very tempting in their life. For that, for today's proceedings, we have to invite and felicitate celebrities. Now, may I invite Maha-AP Women's Forum Co-Chairperson and Joint Secretary of AHA, Dr. Neha Singh, to do this duty. Over to Dr. Neha. Thank you, ma'am. Good evening, everyone. I welcome all the respected dignitaries, my seniors, colleagues for today's webinar. AHA Raigad, along with IAP Raigad, celebrated this week of International Adolescent by organizing and doing many interesting activities, which were not only informative for we participants, but many teachers, parents, and most important, our young champs will definitely get benefited. I, being the Maha-AP Women's Committee co-chairperson, and on behalf of Maha-AP Women's Committee, promise that we will definitely, together with Raigad AHA, organize many such programs and activities, both physical and online, for the betterment of our children in this whole year. Many dignitaries from Maharashtra Academy of Pediatrics as well as Maharashtra Academy of Pediatrics Women's Committee joined us in our last sessions, and today also I can see many dignitaries from Maharashtra as well as Central IIP and AHA branch have joined us. I acknowledge and welcome our immediate past president, Maharashtra Indian Academy of Pediatrics, Dr. Hemant Gangolia sir. I can also see President IAP Raigad, Dr. Vikas More sir, President AHA Raigad, Dr. Chitra Kulkarni ma'am, Dr. Sunita Ingle ma'am, Dr. Nilima Bhandarkar ma'am. I also welcome the speakers of today, Dr. Shubha Kirwarkar ma'am, Dr. Kiran Vaswani ma'am, and soon Mrs. Ashwini Kulkarni ma'am will also join us. I also welcome the other OBs, EBs and attendees on Zoom and YouTube Live. Now I hand over to Chitra ma'am for further proceedings. Over to you, ma'am. Yeah, thank you, Dr. Gangolia sir. He is our medico-legal expert also to share his thoughts. Gangolia sir. Good evening, everybody, and respected guest speakers as well as the office bearers of the AHA and IAP Raigad, respectively. Dr. Vikas More, President of IAP Raigad, Dr. Chitra Kulkarni Madam, President of AHA Raigad, as well as Secretary of both AHA, Dr. Sunita Madam, and IAP Raigad, Dr. Ajay Kohli in absentia, Maha-IP Women Committee Chairman, Co-Chairman, Dr. Neha Singh, and our guest speakers, Dr. Shubha Madam, Dr. Kiran Vaswani Madam. Yes, today's topic, to deal the teens with this anger and all these topics, very difficult one, but still, I am sure with this session, with this all learned faculty speakers, will be able to learn how to deal with this. Yes, probably I will be driving, so probably I may not be able to remain here. And regarding medico-legal aspects, probably somebody will say that regarding that things. But yes, we should remember about the POXO Act, which is very important and for all the doctors as well as for the society. And we know there are many things involved in that.
So probably one may cover that topic. Respectively, if I am there in the network, if network issue is there, probably I may not be there. Extremely sorry for that. Wish all the best success for this webinar, and I'm sure that this will be a huge success. Thank you, Thank you. sir. Dr. Vikas More, our Raigad IIP president, is always supportive. Please give your blessings. Thank you so much for madam for giving the opportunity. At the outset, I welcome all of you on the behalf of IIP Raigad, and I am so proud of my AHA team in the leadership of Chitra madam, who is doing such a wonderful work, and we are getting such a credit because of the continuous activity that she has done throughout the week. I am really proud of my AHA team, and I'm really grateful to Shubda madam and Kiran Vaswani madam for accepting our request to give the talk today. We know, like after reading the heading, that there is no permanent loss for temporary pleasure. I remember a verse from Gita that the Krishna says this world is dukkhale ashashvatam. So this is a world of like misery. So we are trying to find the happiness in the world of misery. It can happen only by self-realization. But our teens are struggling a lot, to understand themselves. They are not aware of themselves. They are not aware of their self. Out of expectation, frustration, they fall prey to the anger and violence, and at the end, addiction. So, as a pediatrician or as a parent or as a responsible citizen, it is our duty to guide them, to make them realize their true potential, to face the tribulations in their life, so that their life and future will become easy. And I hope that this particular CM will help us to actually take the inputs so that we can guide our children. Thank you so much. Thank you. Over Thank to you, you. Dr. Yeah, I could see our Secretary General, Central AHA, Dr. R.N. Sharma sir has joined. Welcome, sir. Dr. Sharma sir, can you please unmute? Yes, thank you, ma'am. Thank you very much. Sir, please give your blessings. It is an honor for us that you have joined. Thank you, ma'am. Thank you very much. And really, thank you for welcoming me. And I request all viewers to please listen till end our star speakers, Dr. Subada and Dr. Kiran Madam. 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 Yes, Dr. Kiran. So please, and I wish all the best for this webinar. And really, you have arranged a very good speakers. And thank you very much. Thank you very much. Yeah, thank you, sir. AHA Raigad pillar, a treasurer of AHA, Dr. Nilima Bandarkar, will now take over, and she is requested to introduce our first speaker, Dr. Shubhada Khirwadkar. She has joined from Melghat. I really appreciate that. Yeah, good evening all. At the outset, I thank all the Raigad IAP, Raigad AHA dignitaries and office bearers. Chitra madam is very instrumental in every activity of Raigad AHA. Now today she has arranged this activity as a part of Adolescent Health Week. And now we are dealing with two issues with these two good speakers. One is Dr. Shubhada Khirwadkar madam. She will be joining us first for the presentation. And she will be dealing with the contents of anger management in teens. Now, Shubhada Khirwadkar madam, I think everyone knows her. She is a adolescent health expert, a pediatrician, adolescent health expert. She is director of Tender Birds Child Clinic, and she is instrumental in projects in Melghat, many projects for adolescent health. She has been National Executive Board member, Adolescent AHA Academy. She has been president of IIP Nagpur, and many publications, many workshops, many activities for teachers and parents she has conducted.
She has received the awards for the same. Now we are blessed today to have her as a speaker for us. Shall we start with the introductory Yes, questions? येस प्लीज मॅडम मराठीत पण विचारा थोडस किंवा हिंदी वॉट एव्हर इन Okay. So Shubhada madam, welcome. And Thank you everyone. to make it interesting for parents and all the listeners or interactive, we have kept the format of question answer session. Right. So काही प्रश्न इंग्लिश मध्ये, काही प्रश्न मराठी मध्ये असं आपण करूया असं मला वाटतं. पहिला प्रश्न आज आपला टॉपिक अँगर मॅनेजमेंट हा आहे. So what I like to say is anger, or everyone gets angry at some part of his time, or every age person gets angry sometime. But in adolescents, we see that as they approach 13, 14, 15 years, जास्तीत जास्त चिडके होत जातात किंवा पेरेंट्सनी बोललेल्या प्रत्येक गोष्टीला, टीचर्सच्या प्रत्येक ऍक्शनला किंवा बोलण्याला त्यांची रिॲक्शन रागाची असते. दे गेट अँग्री व्हेरी इझिली. सो हे ऍडोलसंट्सच्या बाबतीत हे का होत असावं किंवा ह्याची कारणं थोडक्यामध्ये एक दोन आपल्याला सांगू शकाल का तुम्ही? आणि मग आपण त्याला हँडल कसं करायचं त्याच्यानंतर जाऊ. So thank you madam for your kind introduction. मला रायगड IAP यायला नेहमीच खूप आवडतं. चित्रा मॅडम आणि तुमच्या पूर्ण टीमचं, गंगोलिया सर, सगळ्यांचं खूप खूप अभिनंदन. तुम्ही सुंदर काम करता आहात आणि एक नवीन ब्रांच असूनही सगळीकडे गाजता आहात, त्याबद्दल तुम्हाला तुमचं अभिनंदन आणि आभार मला इथे बोलवल्याबद्दल. छान प्रश्न आहे पहिलाच, की आपल्याला नेहमी असं का दिसतं की टीनेजर्स मध्ये खूप राग आहे, संताप आहे, चिडचिड आहे. जसं आता निलिमा मॅडमने म्हटलं की कुठलीही गोष्ट ते अदरवाईज असं घेतात, म्हणजे की साधी अशी कमेंट असेल पेरेंटची तरी त्यांना त्याच्यामध्ये काहीतरी राग येण्यासारखं वाटतं. तर असं का होत असावं? तर माझ्या मते याची आपण जर नीट मांडणी केली तर ती आपण याचे भाग करू शकतो. So first reason is the biological reason. As we all know, teenage is an age where the prefrontal cortex, ब्रेनचा समोरचा कपाळाच्या मागचा भाग हा विशेष डेव्हलप झालेला नसतो. त्याचं डेव्हलपमेंट असतं पण इट्स नॉट कम्प्लीट, आणि तो जवळपास 25व्या वर्षापर्यंत डेव्हलप होत राहतो. त्याच वेळेला द इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ज्याच्यामध्ये त्याला नावाचे जे अवयव आहेत ते खूप ऍक्टिव्ह असतं, तिथे त्यांना त्या इमोशनल ब्रेनमुळे सतत वेगवेगळ्या प्रकारचे जे रिस्पॉन्स असतात आपल्या कुठल्याही गोष्टीचे, ते एकदम रोलर कोस्टर म्हणजे हाय लो असे त्यांचे सतत सुरू असतात. तर त्यामुळे बिकॉज दिस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो भाग आहे मेंदूचा, त्याला आपण विवेकी मेंदू असं म्हणतो. वन विच डील्स विथ लॉजिक, रिझनिंग, कॅन सी और थिंक ऑफ अहेड, कॉन्सिक्वेन्सेस बद्दल विचार करतो, ते या मुलांना जमत नाही. त्याच वेळी त्यांचं इमोशनल ब्रेन खूप ऍक्टिव्ह असल्यामुळे मेनी टाइम्स द अॅमिगडाला हायजॅक्स द लॉजिकल ब्रेन, अँड दॅट्स वाय इट कीप्स ऑन sending wrong emotional signals to the opposite person or the person with whom this teenager is communicating. So inefficient prefrontal cortex and very very active emotional, असे दोन एकाच वेळी आल्यामुळे थोड्या थोड्या गोष्टीला चिडणं, रागावणं, संताप होणं असं होतं. दुसरं मला असं वाटतं देर इज अ सोशियोलॉजी ऑल्सो, because many times they want ki they should be heard, they have an opinion, they have a presence in this world. सगळ्यांनी माझ्याकडे मी काय म्हणतो ते ऐकून घ्या. आणि बरेच वेळा पेरेंट्स आणि टीचर्स हा लहान आहे किंवा याला काही फारशी अक्कल नाही म्हणून त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतात. सो दोन्ही कारण त्याच्यामध्ये असतात. आणि थर्ड, which if you ask any teenager, so he will say ki these people who are elder to me, they in some way backward, they cannot think of the world of present, आणि आमची जनरेशन गॅप आहे, so they cannot understand me. So all the three combined
lead to lot of anger, frustration, and many times aggression and violence in teenagers. But the important thing is, suppose we teach these teens to handle this Right. anger issue properly, किंवा पेरेंट्सनी, टीचर्सनी, पीडियाट्रिशियन्सनी जर मुलांना मदत केली तर हा इश्यू सॉल्व्ह होतो का? अदरवाईज दीज किड्स विल बिकम अँग्री यंग ॲडोलसंटचे अँग्री यंग मॅन, अँग्री ओल्ड मॅन असेच राहतील. Correct. म्हणजे हे इश्यूज जर सोडवले गेले नाही तर दे विल ग्रो अप ॲज अँग्री पर्सन ओनली. सो Absolutely. So, याच्यासाठी आपल्याला काही करता येतं का? ऍब्सोल्युटली करता येतं. आणि जरी अँगर इज अ नॅचरल अँड नॉर्मल इमोशन, मॅनेजिंग अँगर डेफिनेटली पॉसिबल फॉर एव्हरी वन ऑफ अस. आणि त्यामुळे हे आपण त्यांना जाणवून दिलं की आय अंडरस्टँड दॅट यू बिकम अँग्री, इट इज नॉर्मल, बट हाऊ यू एक्सप्रेस युअर अँगर, हाऊ यू हँडल इट, how you manage it is definitely your skill and which develop. आपण नेहमीच म्हणतो की WHO च्या ज्या 10 लाईफ स्किल्स आहेत त्याच्यामध्ये इमोशनल मॅनेजमेंट एक स्किल आहे. सो ही स्किल जितक्या लवकर लहान मुलांना म्हणजे या टीनेजर्सला शिकवाल, सो द अर्ली दे अंडरस्टँड इट, द अर्ली दे स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स टू बी स्किल्ड इन these लाईफ स्किल्स, the better it is for their future आणि for their present and also for their future. कारण त्यांना हे लक्षात येत नाही की त्यांच्या अँगरच्या रॉंगफुल एक्सप्रेशनमुळे किती गोष्टींना त्यांना त्रास होऊ शकतो. म्हणजे दे कम अंडर स्ट्रेस, दे क्रिएट स्ट्रेस इन पीपल विथ whom they are living their life, with their peers, they are in conflict with law many times. They can unnecessarily आणि बरेच वेळा ते अडचणीत सापडतात. अनेक वेळा टीनेजर्सशी बोलताना त्यांना विचारलं की तुम्हाला कुठल्या गोष्टीचा गिल्ट वाटतो, मेनी टाइम्स दे से आय हँडल माय अँगर रॉंगली, आय सेड समथिंग, आय यूज फाऊल लँग्वेज अँड लेटर ऑन आय अरे एवढं काही रागवण्यासारखं नव्हतंच, इतकं काही करायलाच नको. सो मेनी टाइम्स दे फील गिल्टी आफ्टर giving it a thought because they are not able to manage their anger at the right time. As you all know, Aristotle had said that to become angry is very easy, but to be angry with the right person at right time with right degree is not very easy. ते आपण त्या मुलांना नक्कीच शिकवू शकतो. आणि therefore आणि याच वेळी मला असं नेहमी वाटतं की we are role models for our teenagers. हा ना, हिडन म्हणजे ते आपल्याला सतत ऑब्झर्व करत असतात आणि आपण आपले अँगर कशी मॅनेज करतो हे त्यांच्याविषयी बोल किंवा आपण कधीतरी ते दाखवलं, ते डिस्कस केलं तर त्यांना आपोआप मेसेजेस मिळतात आणि दे ट्राय टू टेक सम स्टेप्स टुवर्ड्स हँडलिंग अँगर. राईट. सो आता आपल्या लक्षात आलं की टीनेजर आणि अँग्री असणं हे दिस इज नॉर्मल किंवा या रिॲक्शन्स असू शकतात बिकॉज देअर ब्रेन इज इन सच अ सिच्युएशन. करेक्ट. आणि वन मोर थिंग आय वॉन्ट टू ऍड मॅडम की मेनी टाइम्स दिस अँगर इज नेसेसरी ऑल्सो. जर आपण एखाद्या गोष्टीविषयी चिडून उठत नाही, संताप येत नाही तोपर्यंत आपण ती बदलायचाही प्रयत्न करत नाही. बरोबर. सो जर यामध्ये आपल्या क्रांतिकारकांना संताप आला नसता तर त्यांनी देशासाठी काय केलंच नसतं. किंवा कित्येक सोशल वर्कर्स आहेत ज्यांना या सिच्युएशन मध्ये अर्ली एज मध्ये वाटलं नसतं की नाही दिस नीड्स टू चेंज, आय हॅव टू फाईट अगेन्स्ट इट. चीड आली नसती तर त्यांनी काय केलंच नसतं. सो सुद्धा टीनेजर्सशी आपण बोलणं की युअर अँगर इज राईट, मे बी इट इज नॉर्मल ऑल्सो, natural also, but use it in a productive way, use it in a channel it properly. हे जर त्यांना सांगितलं तर ते बऱ्याच वेळा निदान काहीतरी प्रयत्न करतात स्वतःचा अँगर कमी करण्याचा किंवा त्याला मॅनेज करण्याचा. सो आपण असं म्हणू शकतो की मेजॉरिटी ऑफ द किड्स किंवा ॲडोलसंट जे आहेत ते थोड्याफार मदतीने पालकांच्या, टीचर्सच्या, पीडियाट्रिशियनच्या मदतीने त्यांच्या रागाला मॅनेज करायला शिकतील ओव्हर द इयर्स.
पण अशी सिच्युएशन ओळखायला मात्र आपण शिकलं पाहिजे की जो अँगर प्रमाणाबाहेर जास्त आहे, ज्याला सायकोलॉजिस्टची किंवा सायकियाट्रिस्टची मदत लागू शकते. तर अशी बरोबर. कुठली लक्षणं किंवा बिहेवियर वर्तनामधल्या अशा काय गोष्टी आहेत की ज्यांनी पालकांनी शिक्षकांनी अलर्ट व्हायला पाहिजे की आता इथे आपली मदत पुरणार नाहीये, प्रोफेशनल हेल्प लागू शकते. तर अशा काही एक टिप्स थोड्याशा सांगा पेरेंट्सना पण लक्षात येण्यासाठी. करेक्ट. सो आपण असं नॉर्मल आणि ॲबनॉर्मल अँगर असं क्लासिफिकेशन करू नये, कारण त्याच्यामध्ये ती डिग्री आपल्याला शोधणं थोडंफार कठीण होईल. पण आपण असं म्हणू शकतो की फ्रिक्वेंटली इतक्या छोट्या छोट्या गोष्टींनी सतत काहीतरी अँगरचं एक्सप्रेशन विच इज व्हायलेंट, विच इज अग्रेसिव्ह, फोड करतोय, लोकांना शिव्या देतोय, स्वतःला हार्म करतोय, दुसऱ्याला हार्म करतोय, and this is occurring again and again, and the child many times, or the teenager say ki I know I should be able to manage this, but I am not able to do it. असं तो स्वतः अनेक वेळा सांगतो की मी छोट्या छोट्या मी चिडतो, रागवतो, मला कळतं ते, पण आय कॅनॉट हँडल इट, आय कॅनॉट मॅनेज इट. अशा वेळी इट इज डेफिनेटली नेसेसरी, एस्पेशली इफ इट इज सेल्फ हार्मिंग. अँगर दोन्ही बाजूनी असू शकतो. Anger can express outwards, it can express inwards also. Correct. So maybe that person सेल्फ हार्म असू शकतो. आउटवर्ड एक्सप्रेशन झालं तर मग तो व्हायलेंट होईल, बॅड कंडक्ट साठी तो लॉच्या कॉन्फ्लिक्ट मध्ये येईल, किंवा मग तो कोणाला हार्म करण्याचा प्रयत्न करेल. असं रिपीटेडली होत असेल, त्याला आपण कंडक्ट डिसऑर्डर असं पण म्हणतो. सो असं काहीतरी असं होत असेल तर तेव्हा नक्कीच आहे. दुसरं इनवर्ड्स, म्हणजे तो काहीतरी स्वतःला हार्म करून घेतो बिकॉज ही कॅनॉट हँडल ऑर मॅनेज हिज अँगर. तर दॅट ऑल्सो इज अन इंडिकेशन की may have some psychological issues which need to be dealt with by an expert. Professional help. हा, राईट. आणि मला इथे एक विषय सांगायचं वाटतं, मेडिकल कंडिशन्स ऑल्सो. ऑल ऑफ अस as pediatricians should know कि there are certain conditions which can be expressed. The only symptom or sign could be a violent expression of anger, like say temporal lobe epilepsy, or a tumor in the temporal or frontal cortex. It can express as repeated anger outbursts. Sometimes even anemia can cause lot of irritation, frustration, चिडचिड आपण ज्याला म्हणतो. ते अॅनिमिक मुलींमध्ये स्पेशली खूप जास्ती दिसतं. त्याचबरोबर काही थायरॉइड किंवा अजून हॉर्मोनल इश्यूज असले तरी पण असं होऊ शकतं. अँड देर आर सर्टन सायकियाट्रिक डिसऑर्डर्स ऑल्सो कॅन एक्सप्रेस इनिशियली, हू कॅन प्रेझेंट इनिशियली ॲज सिव्हिअर अँगर आउटबर्स्ट. फॉर एक्झाम्पल सायकोसिस असू शकतो, किंवा बायपोलर डिसऑर्डर असू शकते, किंवा एखादी पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर असू शकते, ओसीडी असू शकतो. बिकॉज मेनी टाइम्स दीज इमोशन्स लाईक अँझायटी, फ्रस्ट्रेशन, अँगर, अग्रेशन, व्हायलन्स हे सगळे एकाच स्पेक्ट्रमवर असू शकतात. सो या अशा त्यांना शाळेमध्ये किंवा टीचर्सच्या लक्षात आलं, किंवा पेरेंट्सच्या, किंवा त्या टीनेजरनी स्वतः म्हटलं की आय नीड हेल्प, तर याची जरूर एक्सपर्टची मदत घ्यावी. कारण हे हिडन डिसऑर्डर्स असू शकतात विच मे नॉट बी व्हेरी इझिली सीन बाय द पेरेंट्स. आणि केव्हाही आपल्याला असं वाटलं की आय एम अनेबल टू हँडल दिस, सो बेटर टेक हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट. करेक्ट. आपण नेहमी पाहिजे पेरेंट्सनी, टीचर्सनी आणि पीडियाट्रिशियन्सनी सुद्धा. कारण मेनी टाइम्स many of us are not trained for this. So in that case we need. बरोबर. सो याचा अर्थ जसं आपण म्हणतो की शारीरिक आजारांसाठी किंवा फिजिकल इलनेसेस साठी आपण पटकन फिजिशियनची, पीडियाट्रिशियनची मदत घेतो. सेम वे मानसिक इश्यूंसाठी एखादा न हाताळता येणारा अँगर इश्यू असेल तरी काउन्सिलर और सायकियाट्रिस्ट जी मदत मिळू शकेल ती घ्यायला पाहिजे आणि हा प्रॉब्लेम आपल्या कंट्रोल मध्ये ठेवला पाहिजे. आता फक्त adolescent expert also, pediatrician is trained
adolescent Friendly handling. handling So it can also help. बरोबर. आता फक्त मला काही टिप्स पेरेंट्ससाठी किंवा मुलांसाठी अशा हव्या आहेत. म्हणजे जे पॅथॉलॉजिकल अँगर आपण आता म्हणलं किंवा जो काउन्सिलरच्या आणि सायकियाट्रिस्टच्या मदतीने सोडवला जाणार आहे तो इश्यू वेगळा आहे. पण रुटीन मध्ये सुद्धा जी मुलं आहेत ज्यांना अशा तऱ्हेच्या मदतीची गरज नाहीये, पण त्यांना आपला राग हँडल करायला शिकायचंय. याचं महत्वाचं कारण असं की रागाच्या भरात आपण म्हणतो किंवा इन अ फिट ऑफ अँगर काहीतरी अघटित घडू शकतं. असा एखादा इव्हेंट घडू शकतो, आपण कुणाला तरी मारू शकतो, कुणाच्या तरी अंगावर धावून जाणं, त्यातनं कुणाला स्वतःला किंवा समोरच्याला इंजुरी होणं, अशी कुठलीही घटना घडू नये यासाठी मोमेंटरीली किंवा तात्काळ आत्ता राग आलाय ना तर आत्ता लगेच करण्यासाठी अशा काही 1-2 गोष्टी आपण पालकांना आणि मुलांना सांगू शकतो का, की या हे लक्षात ठेवा, खूप राग आला की पहिल्यांदा हे करायचं, अशा काही 1-2 गोष्टी आपल्याला लागतील आपण अँगर मॅनेजमेंट जेव्हाही आपण याच्याविषयी बोलतो तर मला नेहमी असं सांगावं असं वाटतं की इट शुड बी डेल्ट विथ इन 2 फेजेस. एक आहे क्विक फिक्सेस, जे आता तुम्ही म्हटलं की ताबडतोब मी काय करू, ज्याच्याने तो अँगर माझा हे होईल. पण बरेच वेळे असं काही लोकांचं असतं की ते अँगर ते दाबून 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 ठेवतात आणि मग एकदम आउटबर्स्ट होतो. सो कमी प्रमाणात किंवा बरेच जरी अँगर असेल तर त्याला एक लॉंग टर्म मॅनेजमेंट पण आपण ती स्किल सुद्धा त्यांना शिकवली पाहिजे. सो देर आर सम क्विक फिक्सेस अँड देर आर सम सॉर्ट ऑफ कॉग्निटिव्ह बिहेवियर, ज्याला आपण म्हणतो कॉग्निटिव्ह बिहेवियर थेरपी, की ज्याच्यामध्ये यू अटॅक द अँगर और स्टार्ट हँडलिंग द राईट ॲट द रूट, की कशामुळे मी अँग्री झालो, मग त्याच्या मागचे थॉट्स काय असतात माझे, मग ते थॉट्स खरे आहेत का, की काहीतरी मी इथे चूक करतो. ट्राय एक्सप्लोरिंग, बिकमिंग अवेअर दॅट यू आर हाऊ यू बिकम अँग्री. फर्स्ट इज बिकमिंग अवेअर ऑफ युअर अँगर. सेकंड इज एक्नॉलेजिंग दॅट यू आर अँग्री. बरेच वेळा लोक म्हणतात अरे मी एकदम चांगला असतो, लोकच मला राग देतात, म्हणजे तेच असे वागतात की मला राग येतो. सिच्युएशनच अशी आहे, तिथे राग येणारच. सो असं काही दरवेळी नसतं. सो काय काय म्हणायचं, डिस्कसिंग विथ सेल्फ. यू मे ऑल्सो राईट इट डाऊन. कधी कधी मी सांगते की तुम्ही लिहा की कशामुळे तुम्हाला राग येतो, कारण हे जे टेक्निक आहे ना ते लॉंग तुम्हाला पुढे पण उपयोगी पडेल. क्विक फिक्सेस तुम्हाला थोड्या वेळासाठी तेवढ्यापुरतं ते इमोशन पासून दूर जाण्याला मदत करतं. पण तुम्हाला एकूणच काम असेल, स्वतःला स्ट्रेस कमी द्यायचा असेल, बिकॉज अँगर क्रिएट स्ट्रेस ऑन यू ऑल्सो. Just as it creates stress in the situation or on the other person, you all become stressed whenever you become angry. So हे क्विक फिक्सेस आपण त्यांना सांगितलेच पाहिजेत, पण हे सुद्धा सांगितलं पाहिजे की अँगरचे जे असतात ते स्टार्ट विथ युअर थॉट. हाऊ सिच्युएशन और द पर्सन, सेम सिच्युएशन असेल, सेम पर्सन असेल, एक माणूस खूप रागवतो आणि दुसरा माणूस त्याला शांतपणे घेतो, याचाच अर्थ हाऊ यू इंटरप्रिट दॅट सिच्युएशन, दॅट इज व्हॉट विथ अँग्री. नॉट दॅट पर्टिक्युलर इव्हेंट, बट हाऊ यू इंटरप्रिट दॅट इव्हेंट. सो माझं इंटरप्रिटेशन कुठे चुकतंय का, इतकं सारखा मला राग कसा येतो, या माझे जे बिलीफ्स आहेत त्या बिलीफ सिस्टम्स खऱ्या आहेत का. जसं की असं एखाद्याला वाटतं की रस्त्यावर कोणीतरी मला हाताने धक्का दिला, मला राग येण्यासारखीच गोष्ट, आय शुड हिट बॅक, असं त्यांचं पक्क डोक्यात असतं. तर असं काही नाही आहे. बऱ्याच वेळेला तो चुकून असू शकतं. तर तुमच्या बिलीफ तपासून बघणं हे सुद्धा एक लॉंग टर्म अँगर मॅनेजमेंटसाठी खूप आवश्यक आहे. आणि क्विक फिक्सेस तर आहेच, म्हणजे जे त्यावेळेला तुम्हाला करण्याचे, ते जे क्विक फिक्सेस असतात ना ते तुम्हाला तुमच्या आत्ताच्या अँगरच्या इमोशन पासून दूर नेतात काही वेळासाठी. त्याला आपण डिस्ट्रॅक्ट टेक्निक्स म्हणतो. जसं काही सांगतात की बॅक काउंटिंग करा, थंडगार पाणी प्या, जी जागा आहे ती दुसरीकडे जा, छान गाणं ऐका, छान जोक आठवा, किंवा डीप ब्रीथिंग करा, डीप चक्कर मारा. तर याच्यामध्ये ना 2 मला नेहमी असे लोक दिसतात, त्यांच्यामध्ये अँगर बॉईल आउट होऊन बाहेर येते आणि जे आत ती घुसमटत ठेवतात.
जे बाहेर ज्यांची येत असते त्यांनी मग काहीतरी पॉझिटिव्ह फिजिकल ऍक्टिव्हिटी करायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, you can go for a run, you can swim, you can take a shower. ह्या सगळ्या तुम्हाला त्या अँगरच्या इमोशन पासून डिस्ट्रॅक्ट तर करतातच, प्लस तुमची पॉझिटिव्ह एनर्जी चॅनलाइज, पॉझिटिव्हली एनर्जी चॅनलाइज होते, कारण अँगर कम्स विथ लॉट ऑफ एनर्जी. तर ती बरोबर ठिकाणी जर चॅनलाइज झाली तर मग तिच्यातनं अग्रेशन किंवा व्हायलन्स न येता काहीतरी प्रॉडक्टिव्ह गोष्ट होईल. त्याचबरोबर तुम्ही शांत पण व्हाल. ओके, सो हे करू शकतो जे आउटवर्ड अँग्री एक्सप्रेशन आहे. आणखीन कधी कधी ते इनवर्डही असतं. सो त्यावेळेला जसं म्युझिक ऐकणं म्हणा किंवा डीप ब्रेथ्स, मला तर मी एक सांगते की टेक अ लॉंग ब्रेथ आणि इमॅजिन दॅट यू आर इनहेलिंग काम अँड ब्लू एअर. ओके, अँड ते ऑल्सो एक्झेल with a force and imagine that you are venting out red air. So लाल बाहेर काढतोय, ब्लू आत घेतोय, असं 3-4 वेळा तुम्ही केलं, तुम्हाला ते ब्रीदिंग टेक्निकनीच तुम्ही डिस्ट्रॅक्टही होता, प्लस तुम्ही शांत पण होता. बाकी मग योगा करणं पण या गोष्टी टीनेजर्सला खूप अपील होत नाही, हा पण माझा अनुभव आहे. त्यातल्या त्यात माइंडफुलनेस मेडिटेशन त्यांना समजतं आणि ते करतात. अगदी तुमच्या बॉडी विषयी अवेअर व्हा, एक एक गोष्ट बघा, तुमचं हार्ट रेट वाढतोय का, तुम्ही पाल्पिटेशन होतंय का, घाम येतोय का, सो यू बिकम अवेअर. सो इकडे सगळीकडे लक्ष दिलं की आपोआप तुम्ही जे अमिगडाला हायजॅक आहे त्याच्यापासून दूर जाता आणि शांत होता. टेक्स हार्डली 6 seconds फॉर डुईंग इट. सो इव्हन 6 seconds साठी तुम्ही डिस्ट्रॅक्शन केलं तरी दॅट इज मेनी टाइम्स इनफ ऍज अ कंट्रोल ऑफ अँगर. मला वाटतं मॅडमनी बरेचसे मुद्दे कव्हर केलेत, म्हणजे लॉंग टर्म मॅनेजमेंट आणि क्विक फिक्सर्स किंवा राग आल्या आल्या ताबडतोब करायच्या काही तो काय गोष्टी. करायचं? फक्त मला वाटतं की या मुद्द्यावर थोडंसं तुम्ही इन्सिस्ट केलं तरी चालेल की फिजिकल ऍक्टिव्हिटी किंवा व्यायाम किंवा खेळ खूप खूप महत्वाचं आहे. helping you in every type of emotional regulation. Absolutely. In any type of emotional management. So exercising or using your muscles correct always helps. ते आपल्याला माहितीच आहे, एंडॉर्फिन्स निघतात तुमचे जे म्हणजे and you burn your anger aggression there on the field. So ती एक थिअरीच आहे की फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन अँड व्हायलन्स, असं म्हणजे फ्रस्ट्रेट होऊ नये, डिप्रेस होऊ नये किंवा तुम्हाला कुठल्याही प्रकारच्या निगेटिव्ह इमोशन्सनी त्रास देऊ नये, त्याच्यासाठी तुम्हाला फिजिकल एक्सरसाइज ऑलवेज हेल्प्स. आणि खेळ तर उत्तम आहे, कारण खेळामध्ये तुम्ही मॅन मॅनेजमेंट पण शिकता, सेल्फ मॅनेजमेंट पण शिकता, इमोशनल मॅनेजमेंट पण शिकता, प्लस तुम्ही पॉझिटिव्ह तुमची फिजिकल एनर्जी पण चांगली चॅनलाइज करता. सो ऑल टाइप्स ऑफ गेम्स विच इन्व्हॉल्व फिजिकल ऍक्टिव्हिटी आर ऑलवेज बेनिफिशियल. सो आपल्यासाठी म्हणजे आपल्या लिस्नर पेरेंट्ससाठी हा महत्वाचा संदेश आहे की तुमचं टीनेजर 8वी 9वी 10वी 11वी 12वी या सो कॉल्ड अभ्यासाच्या दृष्टीने महत्वाच्या वर्षांमध्ये जरी असला तरी त्याच्यासाठी 20-25 मिनिटाची डेली फिजिकल ऍक्टिव्हिटी तुम्ही कुठेतरी त्याला इन्व्हॉल्व करून घ्या. त्याच्यामध्ये एक अर्धा तास अभ्यास कमी झाला तरी चालेल, बट ही हॅज टू बी काम अँड इमोशनली रेग्युलेटेड. And secondly, you stay calm when he is angry, he or she is angry. हे खूप महत्वाचं आहे. So anger management has to be learned by parents also. Correct. So I think majority issues आपण डिस्कस केले. चित्रा मॅडम, नेहा, if you want to add or ask something, then yeah, Neha, you want to ask something, or shall we move on to the next speaker now? Yes, we will ask the questions at the end. Yeah, sure. Thank you. Now it's time for important aspect of the modern life, addictions in adolescents. And may I invite our Raigad AHA branch secretary, Dr. Sunita Ingle, to introduce our speaker, who is an inspiration to all Navi Mumbaikars, Dr. Kiran Vaswani. Thank you so much, Dr. Chitra, and welcome to all for this program.
It is a pleasure to introduce Dr. Kiran Vaswani, Madam. She is a senior most consultant pediatrician and also an adolescent healthcare provider from Navi Mumbai. Madam is a champion for adolescent healthcare, rather, and she is working on different aspects of their healthcare, like Mission Kishore Uday, adolescent office practices, as well as the counseling, dealing with addiction. So, Madam has a lot of. She's founder of Pulse, which is in tune with kids and teens. Dr. Ajay, yeah, and she's founder of Pulse, which is in tune with kids and teens. Pulse stands for Parents Unconditional Love, Support, Encouragement, Stroke, Empathy. She is the founder chairperson of AHA branch, Navi Mumbai. And besides that, she's faculty for BLS and ALS courses, trainer for basic as well as advanced NRP course. She's a consultant also for Freedom from Diabetes and a faculty member of P4P, that is Parenting for Peace, and member of Lifestyle Medicine, both at Indian as well as international level. So with such a brief introduction, I ask Dr. Chitra Madam to conduct the further proceedings. Yeah, shall we share? Dr. Neha, please share her slides. Dr. Kiran? Okay. If someone is sharing, I need not share. Or shall I try to share? You can. You may. Okay, I'll try to do that. Yes, ma'am, you try first. If any you will need any help, then I will. Just a minute. I'll try to do that. I am happy to share that Dr. Kiran Vaswani is a national figure, and we are fortunate to have national speaker today for our small branch of AHA. And she has kindly agreed to work on Sunday evening. Have I done it? Yes, ma'am. You have to just. Yes. I'll share. I'll make it slideshow. First task done. I'm there sharing my screen. At the outset, let me really thank Raigad IAP and Raigad AHA branch for giving me this opportunity. It's really my privilege and my pleasure. And I thank you for that introduction. Frankly, drug addiction to the extent of what pediatricians can do is what I will deal with. And that is how it should be. Further cases should be ideally referred to the experts. So let me start the thing. The points we will be focusing on will be mainly what is actually addiction. Kiran ma'am, sorry to interrupt, but kindly make it a slideshow. Sorry? The PPT, kindly make it slideshow. Full Is screen. it still not slideshow? No, it is, make it full screen. Okay, at least I had done that and I can see it is. Just first click the button enable editing. I stop share करके करूं? मैम ऊपर से देखिए enable editing का एक बटन दिख रहा है बस नहीं, पर मुझे अभी स्क्रीन पे खाली यही दिख रहा है. ऊपर सब टास्क बार है ना, इसके लिए शायद मुझे नहीं दिख रहा है वो पॉइंट. टास्क बार के जस्ट नीचे मैम येलो कलर की एक स्क्रिप्ट है उस पे लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड व्यू. बट आई एम सीइंग ओनली द फुल स्लाइड. इसके लिए आई एम नॉट एबल टू. आई नो व्हेन आई गो टू दैट. So how I shall I exit this and then again do it?
Yes, Or, ma'am. Please stop sharing once and try yes, once. yes, that is what I'll try. Can Neha do? Yes, that would be better. I think I'll just trying to do that for the last thing. Screen share करके. Am I there now? Correct? Yes. Yeah, yeah. Good. Perfect. Thank you. Jidd, jidd, jidd. It may be good, it may be harmful at times also. Let's see how it matters. Okay, so the points we will be focusing on will be mainly define what is addiction, types broadly, what is it, and what is substance abuse. Why should we discuss this? Is it important for us? Then the next most important point is, why are the children and teens more vulnerable to it? And how do they get exposed? Partially, this point was referred to by Dr. Shubhada also. What is the difference between a child brain and a child or a teen brain and an adult, and how does it make a difference on the effect of substance abuse also? Briefly, the indicators and what should prompt the parents to get concerned. Then we will see very well the preventive strategies, what is in our hands, how do we go about it, different stakeholders, what will be their role. So in simple terms, anything which is very time consuming, it is a habit that we cannot break. Even when we become aware, we are convinced, everyone also keeps telling us that it is causing you harm physically, mentally, and financially also. Yet we are unable to break it. That is where we end up saying addiction. So types can be actually when you are consuming a substance and getting addicted to it. And behavioral is when it is something in your behavior that you are doing. So behavioral can be, most important is media addiction, the screen addiction, where you go on to say fear of missing on something. You must see this, you must be surfing all over information. Then there are compulsive things that happen to you. You go into gaming, gambling, shopping, online stock trading, go into porn addictions, cyber sex addictions, and there are cyber relationships also in chat rooms and social networking. So these are the addictions where you get hooked to this thing. A few adolescent facts in India. Adolescents comprise now at present more than 22% of our population. And it is alarming to know that 40% start taking drugs in their teenage. The first experimentation is usually in the teenage, and 85% of adult smokers have started smoking in their teenage. There we have a huge burden of street adolescents. 50% new cases of HIV occur in the age of 15 to 25 group. Further, facilities for detection, management, and rehabilitation are very inadequate in the country. So it is better that we go into prevention. It is actually a myth where we say the adolescent is a very healthy period. They are so energetic, bubbling, enthusiastic. Why do we need to care for them? But then, as I said before, it is actually a myth.
most of the morbidity and mortality in this age group is totally preventable. And if dealt with in this age, if you can correct it, it will not track into adulthood. Again, most of the lifestyle diseases make their origin in this age only. Smoking by itself, there was one report that said 15-year-olds also have about 2% of smoking, which increases to 20% by the age they are 20 years of age. And this is one of the most important modifiable risk factor for coronary artery disease. So you can understand it has such huge ramifications that we should be taking care of it. First, talk about it, be open in talking, and then taking care of them. This was one study done in the period of 1991 to 2013 by Doctors Ditters, Michael, and Brindis. They have shown various risk factors, various risk behaviors. If you deal with them means there is willingness on the part of community, family, school, individual. If you talk about that and make awareness there, you can change it to, you can see where in the physical fight, what we heard before from Dr. Shubhada. Then the red one is they rode with a driver who had been drinking alcohol. And you can see how it dropped from between 40 and 45 to nearly 25% in 2013. Similarly, had 5 or more drinks of alcohol in a row. Okay, and how it also dropped down if you could talk and make healthy interventions in that group. Current cigarette use, quite a few, it may be an encouraging trend, though they say it has lost its charm, but still what we see in practicality in our community, at least, we don't seem to be seeing that drop. It is probably true of a Western society. This is a beautiful slide which depicts just lighting one cigarette is like lighting your own funeral pyre. 8 lakh people die every year because of tobacco consumption. This is a slide I would like to acknowledge Dr. Atul Kanikar from Nashik. He has many such interesting depictions and interesting ways of putting across the message, and I have borrowed them, and I acknowledge his contribution here. Thanks. Why are children more vulnerable? This is the age of curiosity, exploration, thrill. With fear, they want to do everything, and everything looks cool. They feel relaxed, entertained by these substances. Then we should not forget it may be forced upon them. It is very important to realize this point and be aware and careful enough to bring it out. Are they being forced into doing this for any reason? And these are the ones who really require more help and support. Then brain is hijacked. If this is the brain, I would just like you to focus on this small part, amygdala, which is our emotional center. This is our prefrontal cortex, which is the governing, executive, and conductor of our whole life. It has the judgmental capacity. It knows how to control our emotions, control our actions, and then also organize things, be able to take decisions which are in adaptive way and not maladaptive way. So, but unfortunately, the point here is
if we recall, what do you say? Shall I start introducing things in a bit of Hindi also, so that? Yeah, sure. It will be better if you talk in Hindi. Yes, because the slides are there in English. थोड़ा हिंदी में बोला तो और लोगों को समझेगा. ठीक है. तो ये एक ऐसा इम्बैलेंस्ड पोजीशन है जहां पे एक पार्ट हमारा ब्रेन का बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो गया है, फुल सक्षम है अपना कार्य करने के लिए, और ये है हमारा इमोशनल ब्रेन, एमिगडाला, जो हमारे सभी चीजों में मतलब इतना इमोशनल हो जाते हैं, हम कुछ भी हम रिवॉर्ड के लिए करने के लिए तैयार रहते हैं. जहां हमें शाबाशी मिलेगी, जहां हमें प्रोत्साहन मिलेगा, जिस किसी कार्य के लिए भी हमें उकसाया जाएगा, वो हम करने को तैयार होते हैं. और स्पेशली यदि हम ग्रुप में है तो फिर तो जैसे मॉब मेंटालिटी रहती है, नो फिकर एट ऑल, दुनिया गई इधर की उधर, हम वो करेंगे जो हमारे मित्र बंधु लोग कर रहे हैं. तो अल्कोहल के इसमें अभी इम्पोर्टेंट क्या है, ये हमने बताया कि हमारा ब्रेन डेवलपमेंट स्टेज में है. मतलब क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है. और हम सभी ये जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में बहुत सारी ऊर्जा लगती है, और ये ऊर्जा यदि हमारे अल्कोहल या दूसरे ड्रग्स के कारण कम हो रही है तो ये कंस्ट्रक्शन में बाधा पहुंचने वाली है. इन द सेंस, जो पार्ट्स हमारे ये टाइम पे डेवलप हो रहे हैं, स्पेशली फ्रंटल लोब, जैसे मैंने बताया, हमारे ब्रेन का अगला हिस्सा जो सामने जस्ट हमारे माथे के पीछे है, ये पार्ट हमारा बड़ा एग्जीक्यूटिव है. सब कुछ कंडक्ट करना, हमारे को डायरेक्शन दिखाना, कोई भी चीज को हम कैसे मैनेज करते हैं, ये पार्ट जो है हमारा डेवलप हो रहा है. प्लस हमारी मेमोरी का जो सेंटर है हिप्पोकैम्पस, ये भी डेवलप हो रहा है. तो ये दो पोर्शंस पे बहुत सीवियर इफेक्ट पड़ता है, और शायद इसके लिए हमारे पूरी लाइफ के लिए ये फंक्शंस इम्पेयर हो सकते हैं. ये बात बताना हमारे युवा को, बहुत किशोर और युवा जन को बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनको हमारे एकेडमिक्स में, हमारी परफॉर्मेंस में और आगे ये सब कार्य करने के लिए, करियर के लिए आवश्यक है. उनको जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी तब तक शायद वो इस तरफ ध्यान नहीं देंगे. और दूसरी बात थी कि जैसे बड़ों में, एडल्ट्स में अल्कोहल का इफेक्ट जो दिखता है, जब भी वो लोग बोलते हैं अभी चढ़ गई और बहुत पी लिया, अभी रुक जा, ये वाली बात किशोर और युवा में नहीं उतनी देखने को मिलती है, क्योंकि उनका लिवर फटाफट उसको डिटॉक्स कर देता है. तो जो चढ़ने वाली बात है वो नहीं दिखती है, इसके लिए उनको समझता ही नहीं है कि अरे हमने इतना पी लिया, पर ब्रेन पे इफेक्ट हो रहा है. तो एक तरफ नहीं समझना और दूसरे तरफ डीप लेवल पे उसका इफेक्ट होते रहना, इनको उतना हैंगओवर भी नहीं रहता है सरप्राइजिंगली. इसके लिए लोग क्या बोलते हैं, मैं पचा लेता हूँ, मेरे को नहीं उतना फर्क पड़ता है. बट ये कोई अच्छी बात नहीं है. तो ये उनको बतलाना बहुत जरूरी है. नहीं चढ़ के भी तुम्हारे ऊपर वो इफेक्ट कर सकती है. दूसरी बात है, ये टाइम पे हमारी माइलिनेशन और फायरिंग हो रही है. तो ये माइलिनेशन क्या है, फास्ट कंडक्ट करने के लिए उसके ऊपर जैसे एक कोटिंग लगती है माइलिन शीट की. तो ये माइलिनेशन में और जो कनेक्शंस एस्टैब्लिश हो रहे हैं, इसमें यदि कुछ दुविधा या बाधा होती है तो वो टाइम पर एडिक्टिव बिहेवियर हो जाता है, मतलब ये लत लग जाती है. तो इसके लिए का ये जो मिथ है, भ्रम है कि एक दो बार पिया तो कुछ नहीं होता है, मैं तो कभी भी इसको रोक सकता हूँ, मैं बहुत इस मामले में सक्षम हूँ, मेरे को बहुत स्ट्रांग हूँ मैं, तो ये बात नहीं होती है. सच्चाई यही है कि
एक ड्रिंक भी आपका रिस्क फैक्टर बढ़ाती है और आपको इसकी लत लगती है। सो इट इज नन और डन, कुछ नहीं है या हमने वो मार्ग पे अपना कदम रख दिया है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ जो हमारे यहाँ देखने में आते हैं, अब तक केवल बॉयज में बहुत कॉमन था, लेकिन अभी लड़कियों में भी इंसिडेंस डॉक्टर किरण, अवेलेबिलिटी बहुत ड्रिंक्स है उनके, ये वाटर भी रहता है, वाटर वाटर करके वो एडवर्टाइज करते हैं। पिछली होली में मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा था, एक्चुअली उसका पिक्चर भी लिया था, मुझे दिखाना था, हो जाए इस होली में, और बाजू में बॉटल था वाटर का, लेकिन उसपे वो ब्रांड अल्कोहल का लेबल था। तो ये वाली चीज बहुत ही धोखेदायक है और कहीं ना कहीं ये सरोगेसी एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ हमको आवाज उठानी है और कम्युनिटी और गवर्नमेंट ने भी इसके तरफ ध्यान देना है। ये लोग मेनली करते हैं उत्सुकता, कौतूहल, और कुछ नहीं, हम तो एंजॉय कर रहे, पार्टी कर रहे। पीयर इन्फ्लुएंस, यहाँ पे आगे प्रिवेंशन में हम देखेंगे कि पीयर इन्फ्लुएंस में हमको लाइफ स्किल में उनको बहुत आवश्यक है ये बताना कि नो कैसे कहा जाए। बहुत बार इनको ना बोलना होता है पर वो ना कहना नहीं आता, इसके लिए वो इस दलदल में फंस जाते हैं। अर्ली इनिशिएशन, जितना यंगर एज पे ये इंट्रोड्यूस होगा उतना ये हानिकारक रहेगा। निकोटिन एडिक्शन फिर भी बताया जाता है कि स्पेशली कुछ समय के लिए इसको हमको विंडो पीरियड है जब भी हम इसका एडिक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। 74% ऑफ एडोलेसेंट्स कुछ ना कुछ और कोमॉर्बिड कंडीशंस रहती है। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है या दूसरे कोई सब्सटेंस अब्यूज है या सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सेक्सुअली अट्रैक्ट होना और पुअर स्कॉलास्टिक परफॉर्मेंस, स्कूल में अंक गिरते जाना, ये कॉमन है सब्सटेंस अब्यूज वालों में। इंडिकेटर्स क्या है, ऐसी क्या लक्षण है जो दर्शाते हैं कि इसमें कुछ है, सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। फिजिकली होता है स्नफल्स, नाक सुरसुर सुरसुर करते रहती है, क्रॉनिक खांसी, बार बार खांसते रहना, आंखें लाल, होर्स वॉइस, गला खराश, खसखट आवाज, ब्लैंक स्टेयर्स, बैठे बैठे कहीं भी देख रहे हैं, या किसी किसी के सुई के निशान भी दिख सकते हैं। देन साइकोसोशल, तो मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, कोई भी हाई रिस्क बिहेवियर का नाम लो रह सकता है, लाइक सेक्सुअली एक्टिव, रैश ड्राइविंग और एग्रेसिव होना, किसी को भी मार धाड़ करना, जब देखो तभी आप किसी से ना किसी से, अपनों से या लीगल अथॉरिटीज से या लॉ से भी तुम कॉन्फ्लिक्ट में रहते हो, अपने आप में रहते हैं या दोस्त ही बदल जाते हैं, उनके हाइजीन के तरफ भी ध्यान नहीं रहते है, अपना रख रखाव कैसा है उस तरफ भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है इनको, ये अपनी ही दुनिया में अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस कैन बी बोथ द वेज, बहुत सो रहे हैं या सो ही नहीं रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, ये एज उनकी एकेडमिक्स की है, पढ़ाई में क्या होता है, फटाफट फटाफट उनके ग्रेड्स गिरते जाते हैं, मार्क्स गिरते जाते हैं, वहां जाने की भी आवश्यकता नहीं लगती है, स्कूल एब्सेंटिज्म बहुत हो जाता है, छोटी छोटी बात पे चिढ़कर वायलेंस, एग्रेसिव होना, एंगर, जो हमने पिछले उसमें देखा था सेशन में, हमेशा एक नशे में रहते हैं,
लास्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी चीज में उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है और चोरी करने की आदत बहुत होती है, क्योंकि इनको अपने जरूरतें पूरी करने के लिए यहाँ से वहां से छोटे छोटे खर्चे चाहिए होते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स में सुपारी तो हमारे यहाँ ऐसा हो गया है कि उसमें कुछ बुरा ही नहीं है। इसके लिए ना पेरेंट्स बॉदर करते हैं ना टीचर्स को इसका कुछ लगता है। सिमिलरली गुटखा के लिए भी पिछली बार हमने जो देखा था कि इनको ये मौके बहुत बार फैमिली में भी मिल सकते हैं। यदि फैमिली में ही इसे कुछ गलत नहीं समझा जाता है या फैमिली में इसका चलन बहुत है, तो इनको इसको रोकने के लिए कोई मार्ग ही नहीं है। स्मोकिंग बिकॉज ऑफ सर्टन कोई ऐसे जो तरीके से मीडिया में दिखाया जाता है कि या तो ये एक बड़े होने की निशानी है, उससे अब मैं बड़ा हो गया हूँ, या कुछ भी टेंशन है तो स्मोक करो और आपका टेंशन हटा के आपका काम अच्छा हो सकता है। ये भी बहुत बार दर्शाया जाता है। बियर यूजुअली पहली ड्रिंक है जो हम दोस्तों के साथ लेते हैं, और एक्चुअली हार्ड लिकर घर से दूर जाके दोस्तों के साथ, और यहाँ पर तो कुछ फैमिलीज में भी फादर्स का कहना रहता है कि ये हम घर में इंट्रोड्यूस करें वो अच्छा है, बाहर जाके ना हो। ये बहुत बड़ा भ्रम है और एक नुकसान पहुंचाने वाली धारणा है। इससे हम जितना जल्दी बाहर निकलें उतना सबके लिए लाभदायक है। ड्रग्स कहा जाता है कि रेयर है, बराबर है, स्मोकिंग और गुटखा या बियर से थोड़ा कम है, पर बहुत सीरियस है और अभी इसकी मात्रा बढ़ रही है। कुछ स्टेट्स में तो ये ऑलमोस्ट एज गुड एज स्मोकिंग या बियर हो गया है। हर गली नुक्कड़ पे मिल जाता है, इसके लिए आसानी से उसका सेवन हो जाता है। ये है हम किस स्टेजेस में से गुजरते हैं। पहली बार जब लेते हैं केवल एक क्यूरियोसिटी रहती है, कौतूहल, क्या हो रहा है देखेंगे, सब लेते हैं, मैं भी लेता हूँ। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में या कहीं पर भी ये ग्रुप में क्यूरियोसिटी के कारण होता है। उसके बाद चलो ठीक है, कोई नुकसान नहीं है इसमें, मैं ले सकता हूँ, लेकिन सोशली जब भी दोस्त यारों के साथ है तो ही लेंगे। देन हम जाते हैं सीकिंग पे, मतलब हम ये ढूंढना शुरू कर देते हैं, इसके तरफ ढूंढते हैं कहाँ मिल रहा है, क्या हो रहा है। और अभी हमारे को सोशल में भी हम करते हैं और कभी अकेले में भी कर लेते हैं, इसमें हमको कोई झिझक नहीं रहती है। यहाँ तक फिर भी डील करना आसान है, इनको वापस ले आना आसान है। यूजुअली कोई भी लेवल पर ये कर सकते हैं, पर इसके आगे जो होता है दो स्टेजेस, प्री ऑक्यूपेशन और बर्नआउट, इधर साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट का इन्वॉल्व होना जरूरी है। प्री ऑक्यूपेशन में हम क्या करते हैं, हमारे सभी एक्टिविटीज इसके आसपास हो करते हैं। अरे वो मेरा इसका टाइम है, वो वहां से लाने का टाइम है, अभी वो नेक्स्ट कभी होगा, उसके लिए हम प्लान करते रहते हैं। बाकी चीजों को हम साइड पे रख के इसके तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। और लास्ट होता है बर्नआउट, जब भी उसके बगैर हम नॉर्मल नहीं रह सकते हैं, चाहिए वो लेते हैं तो ही हमारी गाड़ी आगे चलती है। और इस टाइम पर कहीं ना कहीं सुइसाइडल आइडिएशंस भी बहुत आते हैं। ये जीवन का कोई अर्थ नहीं है और इसको खत्म करना है, ऐसे वाले ख्याल जब आने लगे तभी बहुत आवश्यक है कि इनको हम प्रॉपर सेंटर्स में प्रॉपर एक्सपर्ट्स के साथ ही करने को देखें। इसमें कहीं पर भी हमारे मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि ये चलता है, ठीक हो जाएगा, वो सुधर जाएगा, ऐसी वाली बात नहीं है। जब तक हम लोग एक्टिवली उसके लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक ये रिवर्स गियर में जाना संभव नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 3 लेवल्स पर। कम्युनिटी लेवल पर जैसे मैंने बताया,
कुछ नियम और कानून स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि इसका प्रलोभन कम हो सके। सोशली रिफॉर्म्स होने चाहिए, समाज में उसके लिए कुछ ऐसे किसी ने ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे इनका हम रिवर्स गियर में या मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको प्रिवेंट कर सकें, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मीडिया रेगुलेशन जैसे मैंने बताया बहुत जरूरी है। फैमिली में गेटकीपर्स कौन होते हैं? फैमिली मेंबर्स, टीचर्स या डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स, इन लोगों में पहले अवेयरनेस आना, इनमें वो बात तो होनी चाहिए कि ये चीजें इसके लक्षण हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जितना तुरंत हो सके इनको पहचानना और इनकी सहायता करना ये बहुत आवश्यक है। इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है? लाइफ स्किल्स, इसमें सब में बड़ा लाइफ स्किल है हमको ना बोलने को आना चाहिए, असर्टिवली। वायलेंट होके नहीं चलेगा, बहुत आराम से, सहज से, लेकिन फर्मली नो कहने को आना चाहिए। फैमिली लाइफ एजुकेशन राइट फ्रॉम यंग एज, जितनी जल्दी ये बातें सिखाई जाए उतना इनके ऊपर, मतलब जो हम अर्ली स्टेज में सीख के आगे बढ़ते हैं अभी एक सेकंड के लिए आप देखो, एबीसी हानिकारक इफेक्ट्स बता देते हैं तो इनको ये कन्विंस रहते हैं कि कोई कुछ भी बोले मुझे इस तरफ जाना नहीं है। देन जब ये हो गया है एक लेवल पे, आपको रियलाइज हो रहा है कि इसको जरूरत है, तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करके एक्सपर्ट्स ये देते हैं थेरेपी, और कहीं पर कुछ और साथ में है, स्पेशली सुइसाइडल आइडिएशन या सिवियर डिप्रेशन या दूसरे कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, तो उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी लगेगी और ये एक्सपर्ट्स के पास है। इंडिकेशंस फॉर रेफरल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि एक भी उनका आइडिया है कि ये जीवन में कोई अभी कुछ रखा नहीं है तो इनको रेफर करना बहुत आवश्यक है, और पेपर पे डॉक्यूमेंट करना कि उसको हमने यहाँ रेफर किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिनका पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है, कुछ साइकोलॉजिकल डिजीजेस है, या फैमिली ही उतना केयर नहीं करती है, या फैमिली में ही बहुत सारा अल्कोहलिज्म और ड्रग्स चलते हैं, तो इनको भी रेफर करना जरूरी है। और जैसे मैंने वो पाथ बताया था, क्यूरियोसिटी, लर्निंग, उसमें थर्ड स्टेज के आगे जिधर हमने देखा था, तो उसके लिए भी रेफर करना है। और एक से बढ़ के बहुत सारे रिस्क बिहेवियर्स हैं, जैसे वो ये तीनों चीजों का सेवन करता है, और ड्राइविंग है, दूसरों के लिए भी हानिकारक है, और बहुत सारे मतलब सेक्सुअल एब्यूज भी है, तो इनको तो जरूरी है। और कुछ कंडीशंस है, और जो यंग एज पे शुरू किया है या एक बार छोड़कर अभी वापस ड्रग्स के तरफ गया है, आपने शुरू में किया, क्यूरियोसिटी लेवल पे था, बंद कर दिया और अभी वापस फिर शुरू किया है, तो इनको भी भेजना जरूरी है। प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज में लेट अस स्टार्ट कि इनको शुरू से ही ये चीज गलत है, मेरे लिए नहीं है बोलना, समझाना है, अपने बॉडी को रिस्पेक्ट करने को दिखाना है कि ये एक अनमोल हमको उपहार मिला है, इसका एनीथिंग, इसका संरक्षण हमको कैसे करना है। इधर एक मैं बोलती हूँ कि हमको सभी को कुछ ना कुछ गिफ्ट मिला है, या हमने खुद से गिफ्ट दिया है, अपने लिए कुछ खरीदा है, कोई अच्छा मोबाइल फोन होगा, या किसी और ने हमको कुछ ऐसे, या टीनेजर्स में कोई
टॉयज या कुछ ऐसी चीज है जो उनको बहुत पसंद है, तो वो गिफ्ट की वो कितनी निगरानी करते हैं, उसकी देखभाल कैसे करते हैं, ये पूछकर, ये एक बॉडी भी आपकी गिफ्ट है, इसको आपको वैसे ही संभालना है, ये पॉइंट जितना जल्दी, जितना यंग एज में बताया जाए उतना अच्छा होगा। इसके लिए हम अगर लास्ट में थोड़ा समय है तो एक छोटा सा मेडिटेशन करके भी मैडम दिखाएंगे। ऑलरेडी वी आर लेट, ऑलरेडी वी आर मालूम हो गया, 10:15 बज रहे, so I'm not 10 हो going गए, to तो that point. हम नेक्स्ट सेशन में वो ये- रखेंगे। नहीं, आई एम नॉट डूइंग इट, दैट्स व्हाई जस्ट चेक द टाइम आल्सो। स्क्रीन जोन्स घर में फ्री करना चाहिए। देयर आर सर्टेन जोन्स वेयर देयर विल बी नो स्क्रीन्स, जैसे बेडरूम में, डाइनिंग टेबल पे, किचन में, इवन वाइल ट्रैवलिंग, अगर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो वो टाइम भी स्क्रीन टाइम बजट बनाना चाहिए। खाते समय कभी स्क्रीन नहीं रहेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बी ओपन टू टेक हेल्प। बाहर जाएंगे, बताएंगे, इज्जत का कचरा होगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसी वाली बात से बाहर निकलना है। इज्जत के कचरे से अपनों की जिंदगी का बेहाल ना हो, ये सोचना जरूरी है। दिस इज वन थिंग दैट आई लाइक। हम सबको एक लैंप बनना है। जितने भी गेटकीपर्स है, गेटकीपर्स कौन है? जो इनकी देखरेख करते हैं, टीचर्स, गुड फ्रेंड्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी में कोई भी है, इनको लैंप बनना है। खुद को प्रज्वलित करके इनके जीवन में उजियारा लाना है। तो एक एक LAMP से देखेंगे हमारे कौन से गुण ये हमको, वो बोलते हैं ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सो L इज फॉर लव अनकंडीशनली। तू ये ऐसे करता है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तेरे को मैं नहीं चाहता हूं, ऐसे नहीं। यू लाइक दैट पर्सन, यू लव दैट पर्सन। व्हाट यू डू नॉट लाइक और लव इज दैट एक्ट, वो एक्शन जो करता है। इसके लिए जो एक्ट कर रहा है और जो एक्शन हो रही है, ये दोनों में फर्क महसूस करना जरूरी है। उनको सुनो, उनको बोलने दो। हर बात में मैंने तुझे बोला था, तू ये नहीं करता है, ये करना बंद करना है। लुक आउट फॉर सटल हिंट्स और मैसेजेस। छोटे छोटे मैसेज कभी कभी ये खुद से बताते हैं, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरी मदद करो ना, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ ना। ये छोटे उनके संदेश कैच करना जरूरी है। जजमेंटल, लेबल, ब्लेम, शेम, रिडिक्यूल करना बंद करने का मतलब, तू बेकार है, तू नालायक है, वो देखो कितना अच्छा है, तुझे कुछ नहीं जमता है, तू ये फैमिली के लिए कलंक है, मुझे तुझे अपना बेटा कहने को शर्म आती है। ये बातों से जितना दूर रहेंगे उतना उसकी मदद अच्छी तरह से कर पाएंगे। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इनकी स्ट्रेस बढ़ाता है। तुझे इतने अंक आने ही चाहिए, वो देखो कितना कंपटीशन में अच्छा करता है, तेरा नहीं होता है, तुझे तो डॉक्टर ही बनना है, IAS करना ही है। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं, गोल्स रहने दो पर अनरियलिस्टिक नहीं। मॉडल लाइफस्टाइल, खुद गेटकीपर्स ने प्रॉपर रोल मॉडलिंग की, वो ये सब करेंगे तो इनमें भी ये अपने आप से वो सीख लेते हैं। डाइट के विषय में, एक्सरसाइज में, मेडिटेशन, मीडिया यूज, सब हमको रोल मॉडल करना है। मोटिवेट करो इनको, ऐसे कुछ हीरोज के बारे में, ऐसे कुछ लोगों के बारे में बताने का जो अपने चैलेंजेस से लड़के यहाँ तक आए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आप भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। जो मिला है उसके लिए आभार। बहुत कुछ मिला है, बहुत दिया है देने वाले ने हमको, आंचल ही में ना समाये तो क्या, ये बात है। बहुत मिला है, उसका एक छोटी छोटी चीज के लिए आभार और कृतज्ञता बहुत आवश्यक है। उनके एक्टिविटीज, प्रोग्रेस, उनको बता के उनको मॉनिटर करने का। मेंटल हेल्थ फ्लैग साइंस, मूड चेंजेस या जो भी और आगे हमने देखा है,
वो अवेयर रहने का और उसके लिए मदद लेने की। पेरेंटिंग एक अथॉरिटेटिव होती है, पॉजिटिव पेरेंटिंग, जिसमें आप उनका सम्मान करते हुए उनको कुछ करने को बोलते हैं। मेरा ये ऑर्डर है, ऐसे ही करना है, या तुझे जो चाहिए कर बेटा, मैं तो तुझे सब देने को तैयार हूँ, ये सब गलत है। डिसिप्लिन भी हो और सम्मान भी हो, इसे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग कहते हैं। लाइफ स्किल्स प्रोवाइड करने में मदद करो। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोफेशनल हेल्प लेने से कभी भी नहीं झिझकना। ये समय पे लेना बिना कोई हिचकिचाहट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टुगेदर फॉर अ हेल्दी टुमारो। Thanks once again for giving me this opportunity. Thank you. Will you please stop sharing? Yeah. Thank you very much. Very nice and elaborative presentation. आपने एडिक्शंस के बारे में बहुत अच्छी तरह से बोला और साथ में क्या नहीं करना चाहिए, प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज भी बहुत अच्छी तरह से बोला है। अभी हम जुड़े हुए हैं एक सक्सेसफुल लॉयर के साथ में। Ashwini Kulkarni is there, and she is a practicing lawyer, and she will enlighten us about the laws which are pertaining to adolescents. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर नेहा सिंह से कि वो मैम से कुछ क्वेश्चंस किए तो पूछे। Thank you, Chitra ma'am. Good evening, Ashwini ma'am. Hello. Good evening. Welcome, ma'am. Ma'am, I want to ask you something. Like many adolescents and teens are now taking up drugs like tobacco, alcohol, and ultimately it is affecting their brain and leading to many behavior changes. So, which is prone for the crime. So, are there any punishments or rules like for these adolescents and their caretakers in our country? Yes, there are various punishment. Actually, because of due to short time, I would like to explain the two acts, that is POCSO acts and Motor Vehicle Act. Offenses and punishment relating. Okay. First of all, as per Juvenile Justice Act 2000, there are 6 categories. Legislation including 6 categories of children subject to jurisdiction of juvenile court. Okay. First one is delinquent child. Second one is undisciplined child. Third one is dependent child. Fourth one, neglected child. Fifth one is abused child. And sixth one is status offender. Okay, these categories which helps to how to give punishment. Okay, the first one, the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. Actually, this act, I would like to explain only punishments. One minute. As per Section 14, POCSO Act, I would like to categorize 2 offenses and punishment. First one is use of a child for pornography. And this offenses punishment is, upon the first conviction, 5 years of imprisonment will be given. However, further conviction, the jail time can go up to 5 years and plus fine. The next one is use of a child for pornography while committing an offenses. Then this punishment, a minimum of 10 years of imprisonment that may extend up to imprisonment for life. Okay. Then next category is aggravated sexual assault. And the punishment for this is 5 to 7 years of imprisonment plus fine. And a sexual harassment, it gives punishment up to 3 years of imprisonment plus fine. Then penetrative sexual assault, that is aggravated in nature, a minimum of 20 years of rigorous imprisonment that may extend it to a life sentences plus fine. Then
Next one is a sexual assault that is penetrative in nature on child between 16 to 18 age limitation. So the punishment is a minimum of 10 years of imprisonment that may be extended to imprisonment for the remainder of natural life. Okay, that these are the punishments which is given by the POCSO Acts. The next one is New Motor Vehicle Act 2019. That Actually, is this for act the accidents, no? Not obeying the traffic rules. traffic rules not. This is for the accidents. Actually, the new provision has been launched, so I can specifically say about this. The rules for minors, a new provision has been added. The bill which regret to underage drivers, under which guardians or vehicle owners shall be held guilty in case of offences by juvenile. A fine of rupees 25,000 with 3 years imprisonment will be imposed, and a juvenile will be tried under Juvenile Justice Care and Protection of Children Act, and the registration of vehicle will be cancelled. Okay, the actually मी स्पेसिफिकली मराठी सांगते की अल्पवयीन व्यक्तीने जर गुन्हा केल्यास वाहनाच्या मालकाला देखील दोषी ठरवलं जातं आणि 25,000 रुपये दंडासहित 3 वर्षाचा तुरुंगवास होईल. शिवाय गाडीची नोंदणी म्हणजे जे पॅरेंट्स असतील किंवा जे कोणी जे मेन ओनर असतील त्या गाडीची नोंदणी देखील 1 वर्षासाठी रद्द केली जाईल. आणि त्याच्यापेक्षाही तो ऑफेन्स थोडासा ग्रीव्हियन्स वाटला तर त्यांचा वाहन परवाना लायसन्स देखील रद्द केलं जातं. म्हणजे जो ऑफेन्स घडला असेल त्याची ग्रॅव्हिटी बघून त्या पद्धतीची पनिशमेंट डिटरमाइन केली जाते. आता आपल्याकडे खूप कमी वेळ होता त्यामुळे मी फक्त या 2 गोष्टींपुरतच बोलतेय. नेक्स्ट टाइम मी बाकीचे गोष्टी पण एक्सप्लेन करेन. थँक्यू सो मच. थँक्यू मॅम. व्हेरी नाईस इन्फॉर्मेशन. आणि सगळ्या कुमार वयातील मुलांनी आणि त्यांच्या पालकांनी पण हे लक्षात ठेवायला पाहिजे की खूप कौतुकाने सांगितलं जातं की अरे हा 13-14 वर्षाचा आहे तरी गाडी चालवतो. सो अ बिग नो फॉर दॅट. ओव्हर टू नेहा. एनी अदर क्वेश्चन्स? No, ma'am. All the questions. Dr. Shubda or Kiran ma'am? No, ma'am. Okay. Shall we go for? Yeah. Yes. Sorry, you said you asked me something. Yeah, we were seeing that any questions in chat box, but usually it is like saying thank you only. There are no questions in the chat box. Shubda madam, खूप छान सांगितलं. Shall we go for vote of thanks now? Yes, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you once again. On behalf of Raigad IAP and Raigad AHA, let me thanks all the speaker, Dr. Shubda Kirwadkar, who has joined from a remote area of Melghat. Dr. Kiran Vaswani ma'am, she has spared her Sunday evening me time for us. Dr. Neha Singh, she has kept her daughter aside and given time for our project. All the dignitaries, Dr. Sunita Ingre, our Dr. Dhananjay Rajput, Dr. Sadhna Gupta, I could see Dr. Vishal, who has spared all his Sunday time for us. Thank you very much. And let us have a good next webinar in next 3 or 4 months. Now we are concluding the International Adolescent Health Weeks. Thank you. Please stop the Chitra, recording. there was a doubt from someone in chat box. Yeah, just let me see. Excellent talk. I have a doubt. Vivek Rege. Yeah. Yes, sir. You can unmute and talk. Ramesh. Vivek Ramesh Rege. Ma'am, can we teach? Yes, sure. The scooty and motorcycle to students of 13-14 age? Yes, very good question. It is not allowed before 18 years of age. Oh, means we will tell them to only roam in our area.
in a gully, or it is wrong? You are not supposed to drive that vehicle before 18 years of age. Once you get license at 18, then only it is allowed. Okay. I will tell my son. Thank you very much. Thank you very much. And thanks for your enthusiasm. Any other questions? Vishal, please stop recording. Ma'am, Chitra ma'am, you Yeah, are. yeah, I will. Okay. Stop. Shall we end the meeting? Yeah. Shall we end the meeting? Ma'am, you have to stop YouTube live. Yeah, 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 yeah. I have.